Welcome to the third episode of Failure Stories, everybody. Today we have our beloved guest, Nidhi Kala, with us. Nidhi is a poet, writer, telegrapher, and educator, and currently she is pursuing her creative journey in writing. So, Nidhi, our people want to hear something about yourself. Please introduce yourself. Hi, thank you for inviting me first. Today I feel like it's kind of mini TED talk that I'm going to give. I'm a writer. Currently, I'm a content writer. I'm freelancing on the side, and I have been a calligrapher, a poet. I used to write Hindi poetry. Basically, it been published as a poet in the Wow. past. So the combination of all these things. So that's me. Superb. So, people, before going ahead, like every episode, I want to tell the mission of the failure stories. So, Nidhi, if you don't know the mission of the failure stories, the mission is that I want to, encourage all the entrepreneurs, all the aspiring entrepreneurs to take calculated risk. Because क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ करना है, they want to get started, but उन लोगों के अंदर एक fear है कि if I start then I will fail and what will happen. So that's why this is the mission of the failure stories, that every guest will tell that how they failed, किस तरह से उन लोगों ने success को मतलब before success they failed and they after that they bounced back. So that's the mission of the failure stories. And core message एक है failure stories का जो मैंने रखा है, core message ये है कि do not repeat mistakes. So this is I'm also practicing whatever mistake हम लोग डेली बेसिस पे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, छोटी छोटी. लाइक आई एम प्लेइंग चेस एज वेल, चेस में भी मेरे बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं. सो आई एम प्रैक्टिसिंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन. So कुछ sometimes it happens that subconsciously unconsciously हम लोग रिपीट कर देते हैं उस मिस्टेक को, बट वही तो है, हमें प्रैक्टिस कर करके उस रिपीट को मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है, तो फिर हम लोग ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होगी. सो दैट्स द कोर मैसेज ऑफ फेलियर स्टोरीज. So this is how we are going to start. Just a second. Oh yeah. So let's get started and let's go a little deeper into the session. So first, who you are today and tell people what are your achievements in short. Okay. So basically, मैं एक writer हूँ. So मैं एक content writer हूँ because content writing is these days it's booming. So people already know कि what content writing is. पहले नहीं पता था, 3-4 साल पहले जब मैं internship करती थी, तो and मैं remote internship करती थी, तो and मैं most of half of my life जब से मैंने काम करना स्टार्ट करा है, I have done remotely only. लेकिन लोगों को लगता था कि what I'm doing. So basically I am a content writer and मैं कैलीग्राफर भी रही हूँ. पास्ट में मैंने पास्ट के 2 साल स्पेंड करे हैं खुद से कैलीग्राफी लर्न करके, एंड उसके बाद कैलीग्राफी टीच भी करी है. उससे पहले मैं लाइक आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 years ऑफ टीचिंग. तो मैं 17 की एज से ट्यूशंस देना स्टार्ट कर दिया था मैंने, और मेरा एंटायर लाइक कॉलेज टाइम मेरा पूरा टीचिंग में ऐसे ही गया है कि आई यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स. तो मेरे को छोटे बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं थे, बट इवेंचुअली टीचिंग देम, and I honestly didn't start teaching for that I want to teach or something, but it was like I wanted money because I wanted to be independent at a younger age. But eventually I became passionate about teaching, and I feel so one of my major achievements in the past has been that मैं रेडियो मिर्ची में फीचर हुई थी. लाइक इट वाज आई थिंक अगस्त, आई डोंट रिमेम्बर, इट वाज 2017 or 2018 August that I was featured in Radio Mirchi.
basically my poem was featured. So I don't know, out of the blue, like मैंने इसी कॉलेज टाइम में बहुत सारी एंथोलॉजीज में पार्टिसिपेट करा था, मतलब अपनी पोएम्स कंट्रीब्यूट करी थी मेरे साथ, और भी लाइक 30 या 40 जितने भी पोएट्स होते थे, उन्होंने एक नहीं कंपटीशन नहीं था, बुक थी लाइक कोई एक था या एंथोलॉजी, तो कोई एक पर्सन था जो कि मतलब पब्लिश करवाना चाहता था बुक, लेकिन उसमें क्या होता था कि सिर्फ एक पर्सन की पोएम या शायरी पब्लिश नहीं होती थी, वो उसने मतलब लोगों को ढूंढा, राइटर्स को ढूंढा, एंड देन उन सब की कॉन्ट्रीब्यूशंस उस बुक में मर्ज करी एंड देन पब्लिश कर दी। तो डिफरेंट राइटर्स और पोएट्स की शायरी थी बुक्स में। तो ऐसे मैंने एक नहीं, दो नहीं, मैंने 4 to 5 बुक्स में करा था। एंड कुछ ऐसी भी थी जो सिर्फ ई बुक थी, उनकी मेरे को आज नाम भी याद नहीं है, तो मैंने मतलब काफी करा था। एंड आउट ऑफ द ब्लू थर्ड बुक परिभाषा, सो दिस वाज द बुक जिसमें मेरी पोएम्स थी, थर्ड बुक में परिभाषा। और आई डोंट नो हाउ दिस आरजे गॉट read this book, and mine was the, I think so, first या second feature जो उन्होंने करा था। He recited that poem in one of his shows. So that was how I got featured, and suddenly I received a message on Instagram. I was tagged on Instagram and Facebook. So that was my first biggest achievement as a writer, because everyone used to think, what are you doing and everything. And then I received wishes and compliments from my school teachers, from people who used to not talk to me in school. So that was a very big achievement for me as a writer. So yeah. Super. So अगर कोई यहाँ पे poem में interested है तो Nidhi, just send me all the links and I will put all the links in below this video. This video is going to be featured on YouTube as well. Oh, this is only on YouTube, so I will post all the links, all the materials you have. Just give me all the material and I will share with the audience. So next is that let's talk about your professional journey on LinkedIn and how you reached where you are today on LinkedIn. So let's talk about that as well. So basically, I didn't think that I'll reach this stage, or LinkedIn, basically, I started as a job seeker. That चलो job ढूंढते हैं, and वो भी ऐसे हुआ था that I was like I wasn't able to crack interviews. I was trying कि चलो job लग जाए, कुछ हो जाए, and that time also I was बस ये था दिमाग में, and so I have been this person कि ना मतलब जिस चीज के लिए आप पैशनेट हो ना वही करना है, चाहे फिर आपको पूरी दुनिया ना पागलों की तरह बोल ले कि मतलब ये जरूरी नहीं है कि इसी से तुम्हारा मतलब अर्निंग होगा या कुछ भी होगा। मतलब कितना ही उन्होंने बोला मेरे को, पहले ऐसी कैलीग्राफी के लिए बोला मेरे को सबने कि मतलब कि नहीं होगा, ये है वो है, एंड उसके बाद फिर उसके बाद जब मैंने कैलीग्राफी पे ब्रेक लगाया एंड आई स्टार्टेड डूइंग दिस, देन आई वाज लाइक नहीं, अगर दोबारा करना ही है तो राइटिंग ही करेंगे फिर दोबारा से कंटिन्यू। बट आई वाजंट एबल टू क्रैक इंटरव्यूज। So my friend, so basically my friend has been my motivation. She's my childhood friend. We are friends since fourth. So she has always been my motivation, and she was the first person जिसने मेरे को कॉलेज में भी बोला था कि निधि, this is your hidden talent. Writing is your hidden talent. Wow. Like you have such a nice Hindi. And from that day, when the day she said this, उस दिन से मेरे को लग गया कि हाँ निधि, this is something that you can do very well. So that was the first motivation. And when I wasn't able to crack interviews, so she is kind of a teacher to me as well, you can say, because she's so brutally honest that वो फेस पर तुमको मतलब शब्दों से थप्पड़ मार देगी. So when I wasn't able to do calligraphy, I quit calligraphy and I was trying to find out things. She was the one she said कि मतलब निधि की क्या हो रहा है ये लाइफ में कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, एंड इतने इंटरव्यूज तुम्हारे तू नहीं क्लियर कर पा रही है, क्या है ये सब, ये है वो है.
तो उसके बाद शी सजेस्टेड मी कि चल naukri.com छोड़, बाकी सब कुछ छोड़, गो टू लिंक्डइन, ये सारे अब ओल्ड डेटेड है, लिंक्डइन पे जाके जॉब्स ढूंढ। देन उसके बाद देन I had created my LinkedIn account years back ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए, बट देन मेरे को समझ नहीं आया, देन आई लॉग्ड आउट ऑफ इट एंड उसके बाद कभी ओपन नहीं करना हुआ। देन उसके बाद last year 2020 में I again logged in, so basically I was kicked out of LinkedIn 2 times because because I didn't know how to use it and मैंने बहुत सारे invite send कर दिए थे, बहुत सारे connection send कर दिए थे, और when you are very new, just fresh on LinkedIn, you can't send like that, वो spammer समझते हैं आपको। So twice my account was restricted, फिर उसके बाद मेरे को third time account create करना पड़ा अपना। Then उसके बाद 2 months were like that only, I was understanding कि क्या है ये, कैसे है यहाँ पर हाँ jobs वगैरह का क्या सीन होगा, and honestly I never applied for any job वहां से। फिर but it was quite interesting but it was quite interesting because I started following a few creators and reading their content. That was the point जहां से मेरा personal development start हुआ। Honestly उससे पहले भी मैंने काफी सारी शुरुआत से start करने के लिए, because I was doing internship in 2018. Then in 2018 मैंने calligraphy start कर दी थी, which meant मैंने content writing की internship से और content writing से मेरा थोड़ा सा break आ गया था, इसलिए I needed to start fresh। तो उसके बाद जब मैं 2020 में start करा तो I was feeling कि ना मेरे को अपने आप को दोबारा से polish करना पड़ेगा, because बहुत सारी चीजें हैं जो मैं भूल गई हूँ या फिर कई नई चीजें आ गई होंगी या तो हालांकि मैंने उसके बाद इंटर्नशाला से काफी इंटर्नशिप पे अप्लाई करा था, बट हाफ टेस्ट कंप्लीट होकर दे यूज्ड टू किक मी आउट। हाफ टेस्ट मतलब टेस्ट वगैरह फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, एक बार ऐसे भी हुआ था कि सब कुछ क्लियर हो गया था, बट देन दे अगेन किक मी आउट कि वी हैव selected other person। So these were the things, and one why my friend suggested this, हाँ तो तब क्या हुआ था, तो फिर तब I started doing this कि क्रिएटर्स वगैरह को रीड करना स्टार्ट करा। लेकिन उस टाइम पर ही मेरे साथ एक चीज हुई कि वो ये हुई कि इंटर्नशाला से एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई थी, एंड उसमें ये हुआ था कि इट वाज काइंड ऑफ फुल टाइम जॉब, and but again something happened कि मतलब कि I was kicked out of that job again after 7 days. It was about content writing only, but and it was कि मतलब ये startup था, it was in a foundational phase. So basically there was, I think so, communication gap कि so basically they didn't want a content writer। अब मेरे को समझ आता है कि उनको उस टाइम content writer नहीं चाहिए था, उन्होंने job application लगाई content writer की थी, लेकिन उनको social media manager चाहिए था। खुद confused and yeah, and उसके बाद फिर like I started I had a 1-hour chat with the founder, and उसके बाद it was like कि okay चलो let's start। फिर उसके बाद यही हुआ कि मतलब ये सब कि चलो भाई काम करते हैं, and then I submitted them work, but उनको पसंद ही नहीं आया। फिर मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्यों नहीं आया, और क्लैरिफिकेशन नहीं था कि व्हाट इज मिसिंग। फिर सेकंड टाइम भी सबमिट करा, नहीं समझ आया। फिर थर्ड टाइम जब सबमिट करा, देन सबमिशन, थर्ड टाइम का सबमिशन वाज राइट, बट थर्ड टाइम में उन्होंने बोला कि उनको क्या गड़बड़ मिली, कहते फिर हम काम नहीं कर सकते साथ में। सो एंड इट वाज लाइक मैंने घर में सबको बोल दिया था कि चलो भाई मेरी जॉब लग गई है, फाइनली जॉब लग गई। तो एवरीवन वाज लाइक चलो शुक्र है इस लड़की का कुछ हो गया, ये वो। बट फिर उसके बाद 7 दिन के बाद, सो
so that was the time मेरे पास first laptop आया था, lockdown लग गया था. It was the starting of lockdown. पापा lockdown के time ही laptop ढूंढ के लाए थे, मुश्किल से मिला कि चलो भाई. But what happened, वो अब तो यहाँ से तो मेरे को किक कर दिया. अब क्या बोलूं घर पे. तो घर में तो फिर यही बोला कि पापा कि मतलब नहीं हो पाया, ये नहीं बोला कि निकाल दिया. नहीं हो पाया. तो और ज्यादा होता. फिर उसके बाद तो दैट फॉर अभी तो मैं हंस रही हूँ इस पे. अगले 2 दिन तक मैं ऐसे सदमे में थी उस टाइम की निधि यहाँ से भी निकाल दिया गया है. क्या मतलब अगेन रिजेक्टेड. क्या तुम्हारी है ही क्या. उस दिन तो फिर उस दिन दैट फ्रेंड दैट आई टोल्ड यू अबाउट, मैंने उसको भी बोला. she said कि निधि, she was like she did journalism. So she said me कि निधि न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर. तू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, सारी प्रॉब्लम से ही न्यूज़पेपर से खत्म हो जाएंगी. तू न्यूज़ देखना स्टार्ट कर, तू न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर. बट ट्रस्ट मी, आज तक मैं नहीं करती वो. मेरा दोस्त भी यही कहता है मुझे, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, स्टार्ट रीडिंग. मैं भी नहीं हो पाता. हाँ, मोटिवेशन नहीं आती अंदर से. So I tried कि हो जाए, लेकिन हुआ नहीं. But instead what I started doing was कि LinkedIn पर क्रिएटर्स को पढ़ना जरूर स्टार्ट कर दिया था मैंने. So I did that. और फिर like this way I followed a few creators. I started reading their content. उनका content अच्छा भी होता था, writing tips होती थी. And like starting में पता है LinkedIn पे फायदा क्या होता था. मेरे को ऐसे लगता था उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, because मैंने ट्यूशंस वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था. कैलीग्राफी से मुझ पे डेब्ट आ गया था. So these kind of stuff had happened. तो मेरे पास उस टाइम कुछ पैसे नहीं थे कि अब जीरो से स्टार्ट करना है. मनी के उस पर भी कैसे अपने स्किल ग्रो करी जाए जब आपके पास पैसे भी नहीं है. घर पे नहीं बोल सकते थे, घर वालों को लगता था कि फालतू चीज पे कर रही है. तो इट वाज लाइक कि LinkedIn पे the good thing was that these creators used to do the sessions like these to teach people and for free. तो जितने भी मेरे को ऐसे मिलते थे कि ये सेशन फ्री का है, चलो भाई निधि घुस जाओ. So that was nice. So this way I had attended Unnati Bagga ka session. She taught on LinkedIn optimization. So she had co-hosted that session with another friend of her. And वहाँ पर LinkedIn के बारे में कि how to grow on LinkedIn ये सब सिखाया गया. फिर बेसिकली LinkedIn से शुरुआत इसी तरह हुई कि मतलब कोई वेबिनार देखा, अटेंड कर लिया. अदरवाइज जो भी क्रिएटर्स बोलते थे ना, घोट कर पी जाओ. जो भी वो लिखते थे ना, समझो उसको. उन्होंने कोई बुक रेकमेंड करा, जाओ ढूंढो. कोई पॉडकास्ट आया, चलो जाओ सुनो भाई. तो फिर इसी तरीके से हुआ. देन आई एंड उसके बाद मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा ऑन लिंक्डइन. उस टाइम पर भी मेरा ये था कि चलो जॉब मिल जाए. बट इट वाज लाइक कि कंटिन्यूअसली करने पर लाइक आई वाज क्रिएटिंग कंटेंट एंड ऑन द साइड आई वाज रीडिंग दीज एक्सपर्ट्स. देन आई स्टार्टेड गेटिंग अपॉर्चुनिटीज ऑन ओन. लाइक मतलब कंटेंट लिखा, समवन रीच्ड आउट टू मी. हाँ ऐसे. हाँ एंड बेसिकली इम्प्रूवमेंट तब आने लगी आई फील सो कि जैसे जैसे लिखना स्टार्ट करा दोबारा से. जैसे भी लिखो आप, लेकिन मतलब यू आर एटलीस्ट स्पेंडिंग एवरी डे राइटिंग समथिंग. तो दैट started polishing my skills. And I would say one major thing that happened to me was when I attended Vaibhav Sisanti's 5-day workshop. So I won't say कि हाँ. So it's not that मेरे को उसमें जब तक मैंने वो attend करी, like I took that workshop very late honestly. लेकिन तब तक मेरे को उसकी आधी से
ज्यादा लिंक्डइन की चीजें पता चल चुकी थी। फिर Okay. भी आई थॉट कि भाई सब बोलते हैं कि वैभव से सुनती तो चलो अटेंड कर लेते हैं। Growth marketing. हाँ तो अटेंड कर लेते हैं। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स तो पता चली मुझे उनसे, ऐसी बात Okay. नहीं है। बट नहीं, वो तो व्हाट हैपेंड वाज, वहां पर मुझे मेरी लाइफ चेंजिंग क्लाइंट मिली। So, like, yeah, so this was the major change that happened with me. So, that वहाँ पर फेसबुक कम्युनिटी थी, वैभव ने फेसबुक ग्रुप बना रखा था Right. जहाँ पर सारे अपने एक्टिविटीज वगैरह शेयर करेंगे। तो Right. वहाँ अब अच्छा, इससे पहले ना वैसे मैंने सब कुछ सेटअप कर रखा था, लाइक मेरे फीचर सेक्शन पे कैलेंडरी वगैरह सब कुछ सेटअप था। So, like, this lady reached out to me on Facebook also, and she had, marked the slot on my Calendly कि Okay. call की बात करनी है, and she had messaged me on LinkedIn also that I am hiring a writer to work with me. Wow. So basically, she is a business coach, and trust me, the amount she used to pay me was very less. But even today, I'm ready to work with her because she is the person. Like, we have very friendly relationship, and even today also, she's not just a client. I know people say कि मतलब client mentor नहीं हो सकता, या client के साथ आपके ना बहुत ज्यादा आप open हाँ, नहीं हो deeply सकते, नहीं जा but सकते, she's, हाँ. हाँ, but she is a mentor to me also. Wow. So वो so it's like she mentored me a lot, and that this is why I'm saying कि ये life changing experience था मेरे लिए. I just recently इस अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उनके साथ एक या दो महीने का ब्रेक लिया है. Because of new opportunities that I'm grabbing उसकी वजह से. So, but I learned a lot with her. I handled her LinkedIn profile. I did emails for her. So Wow. these were the two things I did for her, and इसमें मैंने बहुत learn करा. So basically she's a business coach, and she works with founders and organizations ki, how to improve your talent or hire better talent. Like founders वगैरह क्या करते हैं, मतलब वही कि how to improve, make your organization a happy Management level culture वाली. yeah, right. Yeah, वो चीज. तो because of her today I understand कि मतलब अच्छा, ये नहीं कि मतलब जो भी जॉब मिल रही है अगर आगे से, तो कोई भी वो मतलब जितनी सैलरी बोल रहे हैं वो जाके हाँ कर दो, ऐसे नहीं. तुम देखो कि कल्चर क्या है वहाँ का, क्या चीज है क्या नहीं है. Not just this, she always motivated me. I made a lot of mistakes working with her, but she never used to get angry. She used to say, Nidhi, and I was like, I used to panic more कि हो ये हो गया, ओहो अब क्या होगा, ये है वो है. And she used to say, Nidhi, stop doing that. Now just हो गया जो होना था. Basically she was a life coach earlier, so she is a life coach and so business she coach both. understands more deeply. Yes. Yeah, she understands more deeply. So she says कि sit down, think कि मतलब ये क्यों हुआ, क्या reason है इसका. Now think कि मतलब अब तुमने इससे learn क्या करा. Now tell me कि अगर अगली टाइम ये सिचुएशन आएगी तो तुम कैसे इसके साथ डील करोगे. So she used to kind of coach me in that way. So like so she was my kind of second client. I was working with on LinkedIn management. So I learned a lot. Like I experimented basically on her account, sab kuch. So it was like she used to say that I'm your guinea pig, कि सब कुछ experiment कर लो. So but all this taught me a lot, and this helped me improve my skills in a lot of ways. So this was, I would say, कि
whether freelancing लगा लो, internship लगा लो, कुछ भी लगा लो, but even though I was getting paid low, learning working with her was gave me a life changing experience. Super, So this super. was, yeah. So people who don't know about Nidhi's LinkedIn profile, just explore Nidhi's LinkedIn profile, and I want to tell you that Nidhi has, follower base of more than 59,000 on LinkedIn. So you must connect, and you must, connect with Nidhi if you are into, writing field or freelancing field. So Nidhi, let's get to the next point, that let's talk about the family support. Because क्या होता है, बहुत लोगों का family support उनके opposite होता है, family उनके opposite होते हैं काम करने के लिए, whatever things they want to do in life. So how was your family support, and let's talk about your family. So not very good. So basically it was like I did PCM non-med लिया था मैंने 12th 11th में. वो भी like I was confused child कि पता नहीं था कि मतलब किस में अच्छे हो, और अगर था भी मतलब I used to write since childhood. लेकिन मतलब किसी को ज्यादा एक तो पता नहीं चला, because I am very reserved in nature. एंड दूसरी चीज वही सब कहते थे कि राइटिंग इज जस्ट अ हॉबी, ये तो बुढ़ापे के लिए बचा के रखो. बुढ़ापा आएगा तो उसमें लिख लेना अपनी किताबें वगैरह, टाइम पास कर लेना. तो ये तो आई हैड टेकन PCM, और 11th 12th में 11th 12th were very hard for me, especially 12th was very hard for me because of mathematics. I was never good at mathematics, and my father had pushed me to take it. Pushed in a very nice way as in he said कि मैथ्स के बिना तो जिंदगी ही नहीं है, क्या करोगे आगे अगर कुछ और चूज करोगे तो. उसके बाद तो 12th आया, ट्यूशन भी ज्यादा जाने का मन नहीं करता था. आई डिडंट लाइक ट्यूशंस. सो 11th में जैसे तैसे गई, मैथ्स की तब भी नहीं लगाई थी, 12th में लगाई जब एग्जाम्स आने वाले थे उससे कुछ टाइम पहले. तो बट इट वाज वेरी हार्ड, एंड फिर अगेन a few things had happened because of which I couldn't go to another city for studying. एंड मतलब सारे कॉलेजेस वगैरह ओपन हो चुके थे तब जाके मैंने अपने पास वाले कॉलेज में एडमिशन लिया था, बिकॉज ऑफ माय मदर्स हेल्थ इश्यूज. तो वो चीज हुई थी. सो दिस वाज द टाइम लाइक आई डिडंट लाइक कि मतलब मेरे पास कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस से BSc कर रही हूँ. तो तब भी कुछ नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना. But then slowly I told, so basically a year later, like I think so 2015, I used to wake up early morning 4 a.m. तो ये मम्मी का बनाया हुआ रूटीन था, मेरा नहीं था. तो अब तो I have gotten very lazy in waking up, but वो टाइम था कि मम्मी का डंडा रहता था 4 बजे उठना है. सब पूछते थे 4 बजे उठ के करती क्या है तू, और मैं कहती थी कुछ नहीं, पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत. उसमें भी आधे टाइम पढ़ना क्या होता था. इट वाजंट लाइक I was very studious or something. So like this one morning I woke up 4 a.m. I don't know, out of the blue I opened register का आखिरी पेज ओपन करा and I wrote something हिंदी में. देन उसके बाद अब मैं वैसे कुछ नहीं शेयर करती, बट व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह लगाना ये थोड़ा बहुत कर लेती हूँ. उसके बाद मेरी उसी फ्रेंड का मेरे पास कॉल आता है कि निधि तूने लिखा है. मैंने कहा हाँ मैंने लिखा है. कहती फिर उसके बाद कोइंसिडेंटली मैं उस दिन उसके घर चली गई अपनी कॉलेज फ्रेंड के साथ. देन शी सेड कि तूने लिखा था वो. मैंने कहा हाँ मैंने ही लिखा था. तो फिर कहती निधि वैसे तुम्हें बोलना नहीं चाहती, बिकॉज वो ना मेरे को सामने से अप्रिशिएट नहीं करती है कभी. तो उसका अप्रिसिएशन मिलना मतलब जन्नत मिल गई. बहुत बड़ी बात है. हाँ.
So she said कि ना निधि बहुत ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, your Hindi is very nice, तेरा writing बहुत अच्छी है, तुझे यही आगे करना चाहिए. Then that was the day, that was the first day that she said this to me, and was then say I started writing continuously. So there were various other channels, like there's this app called Miraki. There's this this platform called Your Story, Nojoto. अब तो लोगों को ज्यादा पता है, उस टाइम पे इतना नहीं पता था, तो वो क्यूरियसनेस वाली चीज आ जाती है, ढूंढा इतना सब कुछ, उसके बाद इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके लिखना स्टार्ट करा, फिर यहाँ पर राइटिंग कम्युनिटी मिली एक, आज भी उनमें से कुछ लोगों से बात होती है, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंड. और फिर इसी दौरान मतलब ऐसे ही करते करते मेरे को फिर ये अपॉर्चुनिटीज मिली कि एंथोलॉजी वगैरह वाली जिसमें पब्लिश हुई, तो ये सारी चीज, सर्टिफिकेट्स भी मिले इन सबसे ये पापा को सर्टिफिकेट का बहुत रहता है, मतलब एक डिग्री वाली चीज, दूसरा सर्टिफिकेट वाली, लाइक आई डोंट बिलीव कि मतलब सर्टिफिकेट्स आर नेसेसरी, बट ही थिंक्स द ऑपोजिट ऑफ दिस. बट उनको इन सर्टिफिकेट से खुशी नहीं थी उनको, बिकॉज ही यूज्ड टू से कि ये क्या फालतू चीज कर रही है. So and I remember I twice lied. So I twice lied because so मम्मी को पता रहता था, अब मम्मी क्या करे, बीच में सैंडविच बन जाना होता था. So once I went to Delhi. So I stay in सोनीपत, हरियाणा में है. यहाँ से ये लगा लो मतलब आना जाना तो होता ही रहता है दिल्ली, लाइक मैं रेगुलर इंटरवल्स पे आती रहती हूँ. एक तो जो मेरी फर्स्ट एंथोलॉजी थी उसका लॉन्च था, बुक लॉन्च था उसका, तो उसके लिए दिल्ली जाना था. एंड वहां पर इवनिंग टाइम था कि मतलब जो है शाम का है. अब पापा को तो कुछ क्या ही बोलूं, पापा को तो कुछ बोल नहीं सकती, मम्मी को बोलना है मम्मा जाना है. उसके बाद तो वैसे तो वहां से तो मैं टाइम पर आ गई थी. So like I went there with my friend and सबसे मिलना हुआ. So it was a very nice and new experience for me as a small town girl and as a writer कि मतलब भाई writing लिखने में आया है वहाँ, और फिर आप पहली बार ऐसे लोगों से मिली, रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो ये चीज. एंड उसके बाद सेकेंड टाइम भी मैं गई थी. उसके टाइम लाइक मैंने जिंदगी में 2 बार ऐसी वो करी है, मतलब ओपन माइक में मैंने ज्यादा अटेंड नहीं करे हैं. मेरा एक पहला और आखिरी ओपन माइक था जिसमें मैं झूठ बोलकर गई थी, रात के 9:30 बजे वापस सोनीपत पहुंची घर पे अपने. एंड पापा मम्मी फोन लगा रहे थे कि कहाँ है. तो पापा को आज तक नहीं पता कि मैं ऐसे ओपन माइक्स अटेंड कर रहे हैं. पापा जब ये एपिसोड देखेंगे तब पता चल उनके लिए उनको फालतू लगता था ये सब, ये उससे कि मतलब ये बात के लिए बचा के रखो. तो ये चीज होती थी. मम्मा का काफी सपोर्ट था कि मतलब ठीक है कर रहे हो. तो नो वन न्यू कि मतलब मैं रिमोट इंटर्नशिप वगैरह करी कॉलेज में, इंटर्नशाला पे ढूंढ के. अब पता चलता है कि अब जब फाइनली इतना ये सब हो गया है कि हाँ अच्छे से कर रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है कि अच्छा ऐसे भी करा था. मैंने कहा हाँ, ये थोड़ी ना हुआ कि मतलब कुछ दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत टाइम का है. तो दीज आर द थिंग्स. अब वो देखते हैं ना, अब जैसे अब लाइक इट वाज सम टाइम बैक आल्सो दैट ही डिडंट सपोर्ट because he used to think कि content writing is not a promising career, and he wanted me to be he wanted me either of the two things, सरकारी job. So एक तो वो चाहते थे वो, and if not that, so he wanted कि I become a software engineer because I had done bachelor's in computer science. तो इसलिए वो चाहते थे कि मैं ये करूँ.
though somewhere still he feels that I didn't respect his choices, मैंने उनको accept नहीं करा, तो he feels on those notes, तो वो चीज है. But yeah, he's content right now. He's seeing me कि that I am doing very well right now. But वो चीज तो रह ही जाएगी, because he feels that I didn't accept what he wanted. But yeah, but it's like कि मतलब हाँ वो कि I'm doing something better in life, and his Yes, that's as important. people say him कि that I have chosen a very nice Exactly. career. तो क्योंकि लोगों को अब पता चलता है कि मतलब कि क्या क्या लाइन है, ये क्या चीज है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आगे चल के. देन आफ्टर टॉकिंग टू देम, सो ही फील्स कि यस, ओके, ठीक कर रही है ये. तो वो चीज है. If you are loving what you are doing, then what do you want more? You are earning good, you are loving what you are doing. Best. एग्जैक्टली. या. So family support के बारे में हो गया. Now let's talk about तुम्हारी जर्नी 50-50 थी, मम्मी का सपोर्ट, पापा का नहीं सपोर्ट, and you did it in between. Great. So let's go into how you felt and where you felt. What was that one failure that was very hard to digest, and what was that? How you felt? मुझे तो ऐसा लगता है फेलियर ही फेलियर थी. That's what we want. So basically, right now I'm 26. Okay. And मैंने मतलब मेरी ग्रेजुएशन बहुत लेट कंप्लीट हुई, because Same I here. failed. So like it was most challenging phase was this one only, that I wasn't able to clear my graduation, because Okay. I had backlog in maths multiple semesters में, एक semester में नहीं, तो multiple मैथ्स ने बहुत semesters में. परेशान किया. बहुत परेशान करा मैथ्स ने मेरे को, रुला दिया. ये सोच लो 11th-12th में फिर भी मैंने वो नैया पार लगा ली थी जैसे तैसे, बट इन कॉलेज उसने तो रुला दिया. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट. लाइक सबको लगता था कि निधि इज नॉट स्टडिंग, बट ऐसा नहीं था. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मतलब क्यों नहीं होता था. एक तो मेरे को मैथ फोबिया हमेशा से था. जैसे मैथ का पेपर सामने आता था, जो भी रट्टे मारे थे, जो भी फॉर्मूले याद करे, सब उड़ गया. तो और ये बचपन से था मेरे साथ. Still, Papa used to push me कि maths, because he gives supreme importance to science and maths as subjects. So but it was very difficult for me. उस टाइम पे ऐसे था कि मतलब बहुत सुनना पड़ता था घर पे. पहले तो मैंने बिल्कुल बताया नहीं ऑनेस्टली कि ये बवाल हुआ है मेरे साथ कॉलेज में. लाइक इट वाज लाइक 6 सेमेस्टर्स थे. 6 सेमेस्टर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में लाइक जितने भी सेमेस्टर्स में आई थी, तो मतलब एक एक का पता चल जाता था. जैसे आप नेक्स्ट सेमेस्टर में गए, पिछले का पता चल जाता था कि कितने में क्लियर हो या कितने में नहीं हो, वो साथ में निकल जाती थी. लेकिन पंगा तब पड़ा जब मेरा 6 सेमेस्टर क्लियर हो गया. अब ग्रेजुएशन का टाइम था, अब 2 रह गई है, तो तब ज्यादा दिक्कत हुई. अब तो बताना ही पड़ेगा घर पे कि पंगा क्या पड़ा है. तो फिर उसके बाद तब भी मैंने सिर्फ एक का ही बताया था. ज्यादा बताती तो मैं तो तो ज्यादा दिक्कत हो जाती. तो आई टोल्ड कि मेरी फ्री है. मम्मी को पता था. मम्मी को सब पता रहता था. मम्मी को तो बताना. सबकी मम्मी ऐसी है. या. तो देन फिर ताने भी मिलते थे. मतलब ऐसे आके सुनाते नहीं थे, बट वो इनडायरेक्टली वगैरह आते जाते. हाँ आते जाते रहते थे. और तब डिफिकल्ट टाइम था. आई वाज लाइक कि कैसे बस जल्दी से कंप्लीट हो जा, ये हो जा, वो हो जा. तो ऑल दिस स्टफ. तो यहाँ बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई. लाइक 27 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, मेरी 2019 में कंप्लीट हुई. So it took this long, and it was very difficult, honestly.
mentally, emotionally it was very draining कि मतलब नहीं हो रहा. And I studied from GVM Girls College, and it is affiliated to MDU. यहाँ हरियाणा में दो यूनिवर्सिटीज चलती हैं, एक तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का चलता है, दूसरा है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी. एंड मेरे को तो यूनिवर्सिटीज में भी पंगे ही लगते हैं इनकी. तो यहाँ पर ना एक तो रिजल्ट लेट आता है, ऊपर से आप रिजल्ट लेट आता है और ऊपर से डेट शीट भी लेट आती है. आपका ये लगा लो 2 बार ही एग्जाम होगा पूरे 1 साल में, तो इस वजह से भी ना लटकी रह गई. आगे तो फैसला नहीं कर पा रहे थे. या so this was something very draining. That was the time I started calligraphy to calm myself down, to divert towards art and creativity more. So this was very harsh and hard honestly. तो इसके बाद धीरे धीरे मतलब ये वो फेज था कि मतलब यहाँ से बाहर निकलना है. तो मतलब जब 2019 में क्लियर हुई री, तो फिर दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट, नॉट फॉर मी, माय फादर आल्सो, बिकॉज़ ही वाज वेरी मच हैप्पियर कि चलो फाइनली हो गया. तो दैट वाज समथिंग. बट till today I'm just a graduate. I didn't do post graduation because उसके बाद I thought कि चलो ट्राई करते हैं गवर्नमेंट जॉब as everyone says. तो I took coaching. जब मेरा ये री-क्लियर करने की कोशिश कर रही थी उसके दौरान I took coaching. I used to go from Sonipat to मुखर्जी नगर, GTB नगर every day. कोचिंग होती थी. लेकिन बस वहीं पढ़ा जितना पढ़ा, उसके बाद खुद से नहीं पढ़ा, खुद से कभी मोटिवेशन नहीं आया ऑनेस्टली. जब तक वो अंदर से नहीं आता तब तक हो नहीं सकता. हाँ, नहीं हो सकता. ग्रेट तो स्टोरीज. इट जस्ट बॉइल डाउन कि मतलब कभी अंदर से आया नहीं. इट वाज एंड देन अगेन आई वाज लाइक कि निधि, जो मतलब वही जो तुमको खुशी दे अंदर से, आई हैव दिस फंडा ऑलवेज कि या लोग कितना बोले, लेकिन जो आपको अंदर से खुशी देना वही करना चाहिए. चाहे आपके वो कितने ही क्लोज हो, चाहे वो आपको कितना ही हार्ड पुश करें सोसाइटी या फिर 1000 एग्जाम्पल देकर, डू व्हाट यू वांट. तो ये वाली चीज है. ये इसकी बात से सब मुझसे परेशान और दुखी हो जाते हैं, और यही बात है, मैं इस पर अड़ी रहती हूँ कि कोई बात नहीं, कुछ टाइम आप भले अनएम्प्लॉयड रह लो, लेट हो जाए, हाँ लेट हो जाए, लेकिन जो आपको खुशी दे रहा है वो करो. वही करो. That's why आई एम लाइक उसके बाद भी मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी माय करियर स्टार्टेड लेट ऑनेस्टली. ये लगा लो नाउ आई एम 26, 24 से थोड़ा वो ब्लॉसम होना स्टार्ट करा when I started learning. So I would say I don't appreciate much कि मतलब इतना late start हुआ, because I was someone की मतलब who wanted financial independence earliest in her life. That's why I started at 17. लेकिन but I accepted all of these कि ठीक है, everyone's journey is different. कोई बात नहीं, slow start हो रहा है तो I used to hear comments like this from family, from people, लोग आसपास के लोग की मतलब सबकी जॉब लग गई है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, ये है तो है. तो that was the thing. So those things were hard. ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होती है. मेरे भी कॉलेज में बहुत सारे दोस्त थे जो 7-7 साल से 8-8 साल से अटके हुए थे इंजीनियरिंग में. वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे. हम लोग भी उनके साथ थे, लेकिन हम लोग इतना टेंशन में नहीं थे, बिकॉज we had that confidence कि चलो लाइफ में कुछ हो सकता है. यही कॉन्फिडेंस गैरी भी सब लोग में बिल्ड कर रहा है. चलो तुम लोग 24 हो, 26 हो, 28 हो, लेकिन अब तक तुमने लाइफ में कुछ नहीं किया तो कोई बात नहीं. लाइफ इज डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी. तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है. 1-2 साल में सब कुछ ठीक हो ही जाता है. जैसे ही हम लोग वो डिफिकल्ट फेज से बाहर आ जाते हैं, जैसे कि तुम थी तुम्हारे ग्रेजुएशन फेज में, वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था तुम्हारे लिए. तो जब तुम वहां से बाहर आई तो देन it started blossoming. Everything was now you are
stable and you're earning good, you're happy, what else you want? People maybe जो लोग अभी तब graduate हुए थे 2017-18, तुम्हारे जो एकदम सही सही टाइम था ग्रेजुएट होने का, वो भी शायद उसमें से 50-60% लोग अब खुश नहीं होंगे जो जॉब वो लोग कर रहे होंगे। बहुत से मेरे खुद के दोस्त थे जो जबरदस्ती जॉब कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट मनी, बिकॉज दे आर सो अनहैप्पी, जस्ट दे आर सेइंग कि तन्मय तू जो कर रहा है ना बहुत सही कर रहा है, आराम से बैठ के एक जगह पे बैठ के काम कर रहा है, भले ही तूने स्टार्ट करने में 3-4 साल लेट कर दिया, बट you are happy what you're doing, and that's matters in end of the day. Yeah, that matters. Eventually that only matters कि आप खुश हो कि जो आप कर रहे हो, चाहे आप फुल टाइम कर रहे हो, चाहे फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने बिजनेस कर रहे हो, अगर आप खुश हो तो that's the ultimate thing that matters. Okay, now just let's go to the next point is why you failed. If you have anything to talk about on your LinkedIn journey that where you failed in the where do you failed in the LinkedIn journey? What do you think? Is there any failure in your LinkedIn journey? 59,000 followers you have. Is there any struggle in your LinkedIn journey? So basically, I basically didn't understand how to generate leads. So that was my failing point somehow. Although inbound खुद से आ रहे थे, there's no doubt, but उसका ये था कि मतलब कभी आपके पास बहुत सारे लीड्स आ रहे हैं, कभी आपके पास आपका बिल्कुल पॉज लग जा रहा है, तो हाउ टू generate leads basically. So that was something I wasn't able to understand. Then again, I had to talk to a few people, I had to attend a lot of webinars and find out ki how I can. Then I understood ki हमेशा आपके पास इनबाउंड लीड्स नहीं आएंगे, यू हैव टू गो टू देम। जब तक आप लोगों के पास नहीं जाओगे, हाँ, तो हमेशा आपके पास नहीं आएगा। तो दैट वाज माय देयर वाजंट अ मच आई कैन से कि मेजर फेलियर है मेरा लिंक्डइन के साथ। हाँ, पिटफॉल्स होते हैं, वो ये होता है कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ मैं अ लॉट ऑफ टाइम्स। कई बार राइटिंग ब्लॉक आ जाता है, नाउ दीज डेज आई डोंट हैव कंटेंट आइडियाज, तो वो सारी चीज होती है। तो these are the pitfalls that happen, but that there was a time that I failed to understand कि leads कैसे generate होंगी। तो वो चीज अब तो बैलेंस हो गई है, however, but that was something. Just let me stop this recording and start it again because बीच में बंद ना पड़ जाए। Yeah. So okay, so what was the biggest challenge in your LinkedIn journey? From 0 to 59,000 followers. What was the biggest challenge? So earlier when I started my LinkedIn journey, it was writing anything and everything because I started writing basically to build my improve my writing, not to gain followers, not to get clients, anything. Yeah. So I was writing anything and everything. Just yesterday and day before yesterday, I was looking back at those posts and laughing. So it was like that कि मतलब हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, लेकिन मतलब ऐसे भी नहीं कि मतलब कुछ भी लिख दो वहां पर जाकर। बट या, and I had to understand basically this was challenging कि मतलब क्लाइंट्स को क्या चाहिए, कि मेरी पर्सनल ब्रांडिंग जो भी लिंक्डइन पर लिख रही हूँ वो ना जो भी मेरी ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट करना चाहिए, जो मेन ऑडियंस है मेरी। एक तो जिनके साथ मेरे को काम करना है, दूसरा जो बडिंग राइटर्स और लाइक माइंडेड पीपल है वो। तो ये फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया कि वो वाला कंटेंट कैसे बनाया जाए। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद मेनी राइटर्स now as well, because I see what happens is कि ना पता है वो अपनी फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और वो फ्रीलांस राइटर्स और फ्रीलांस जर्नी के बारे में बात करने लग जाएंगे। हाउ विल दे अट्रैक्ट क्लाइंट्स फॉर देमसेल्फ जब वो फ्रीलांसर्स के बारे में बात कर रहे हैं? So I think I also I don't talk much about freelancers and freelancing journey,
but I was creating, even though I was educating. So my most of the content revolved around educating. But education में भी कौन सी टाइप के कौन से टॉपिक्स की आप बात कर रहे हो. So I used to talk about beginner topics. तो वो बहुत जेनेरिक और जनरल टॉपिक्स हो जाते हैं आपको अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए. सो दैट वाज समथिंग वेयर आई वाज फॉलोइंग. तो इसको आइडेंटिफाई करने में काफी टाइम लग गया. बहुत से लोग लिखते हैं तो वो लोग लिखते हैं हाउ टू डू थिंग्स, बट मेन फोकस क्या है कि हमें क्लाइंट्स चाहिए, हमें लीड्स चाहिए, सो वी हैव टू राइट अकॉर्डिंगली. सो सेम प्रॉब्लम मुझे भी फेस होता था जब मैं स्टार्टिंग में ट्विटर पे ट्वीट करता था, एक डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, बट वो सब सॉर्ट आउट हो गया. 6-7 महीने लगे वो सब सॉर्ट आउट होने में. अब कुछ डायरेक्शन है, अब आई नो दैट व्हाट आई एम गोइंग टू पोस्ट, व्हाट वीडियोस आई हैव टू क्रिएट. होता है सब कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, ये प्रॉब्लम तो आता ही है, एक डायरेक्शन फाइंड करना. एग्जैक्टली, या. ओके, सो नेक्स्ट इज that who helped you in your journey. So is there any particular, तुम्हारी friend, उसका नाम जरूर लेना वीडियो में, so so who helped you, is there any special person, like let's talk about them. So she is Manasuta Sachdeva. So she has been part of my journey, and like so if I am a writer today, if I realize that I am passionate about writing, it is because of her. She helped me identify that. She is mummy is because उन्होंने इतने झूठ वगैरह सब कुछ करा है, सपोर्ट भी करा है कि छुप 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 के जा रही है, मतलब. तो मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा है, एंड उसका बहुत सपोर्ट रहा है मेरी फ्रेंड का. Likewise, there have been one friend जिसने और सपोर्ट करा है, because he do whatever you want to do, and it is like we trust you. तो वो चीज रही है कि मतलब जो भी मैं कर रही हूँ, and it gives me much more confidence to me personally कि अगर मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर उनकी आंखों में मुझे अपने लिए कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना, तो निधि यू कैन डू इट. सो सपोर्ट की बहुत जरूरत रहती है. I also have my few of the friends who pushed me, who encouraged me every time, and we need these people around us जो हम लोगों को encourage करे, and that's what we are doing here. We are encouraging young and aspiring entrepreneurs. Risk ले लो, calculated risk लो, failure की चिंता मत करो. Yeah, so take risk but calculated risk. That's the mission. Okay, so another last point is that what inspired you when you failed? What inspired you to bounce back? What was that one thing कि मुझे करना है? क्या था वो? Basically it was like Nidhi do or die thing. Okay. मतलब because it was for me, so I have a problem. I am a Capricorn basically, and it said कि Capricorn बहुत ज़्यादा ना visual scenarios बना लेते हैं mind में अपने. मतलब वो चीजें पहले होती नहीं है, उससे पहले वो बना लेते हैं. It's a good thing also, I feel so, and I think it's a bad thing also, because वो ख्याली पुलाव पका लेते हैं हम लोग पहले ही, चीजें होने से पहले. तो I had this visual scenario in my mind, thinking about myself कि मतलब Nidhi, imagine if you are not able to follow your passion, what will happen? So I used to feel I'll live a miserable life because I'll not be happy. And then I used to think of myself working in as a software engineer, and I used to get scared कि नहीं. So this was something that helped me rise from that failure कि निधि करना है. और मतलब जितने सबको लगता है ना कि नहीं कर सकते, एंड एवरीवन यू सेज कि नहीं कर पाएगी, तुझसे नहीं होगा, उन सबको चुप करवाना है. उनको कुछ बोलो मत, बस उनको अपना करते रहो, और उनके सामने एक दिन रिजल्ट लाके रख दो कि वो खुद ही चुप हो जाए. So this was something that kept me going. Super.
Okay, so we will give a quick summary of the episode. So Nidhi, tell our people that what was the three main reason that you think that you failed. If you have, three main reasons, so that people will not repeat that, in their own journey. So that's the core message, that do not repeat the mistakes. So we are going to tell them these three mistakes. Don't repeat these three mistakes. Yeah. So first is, I would say, no matter how difficult it is, even if it's your parents, it's your peers who are pushing you to take a decision that is not yours, don't take that decision, because in the long term अभी आप उनकी खुशी के लिए पता है कर लोगे वो चीज. I also did thinking कि चलो सबकी खुशी है इसमें, but eventually you will not be happy and you will not be able to give that result. और जब आप नहीं दे पाओगे ना, तो आप जिनको आप खुश करना चाह रहे थे ना, वो आपसे और भी ज्यादा नाराज और दुखी होंगे. तो इससे बेटर है कि आप उनको स्टार्टिंग में ही नाराज कर लो, ताकि हाँ, तो एटलीस्ट आप खुद को खुश रख पाओगे, और जब आप खुद को रख पाओगे ना, तो इवेंचुअली दे विल अंडरस्टैंड दिस थिंग. So I feel so this is one thing that I failed basically. Second, I feel so that so I now understand the concept of subconscious mind by my mentor and client. So I feel so मेरे मन में बचपन से ही एक डर भर गया था for maths, that I can't do maths. And like this is something that this fear always I had this fear in my mind, so I was never able to do maths or get good marks in maths. And this you need to analyze your mistakes, mistakes नहीं, weaknesses. मेरे को हमेशा से पता था that maths is my biggest weakness. Still I pursued my weakness. Now there are two kind of people. Either they can excel their weakness, or they can leave their weakness. So it depends entirely on you. I knew that I'll never be able to overcome this weakness. Till I chose that weakness. That was my biggest default. I shouldn't have done that. So this is something, this second thing. Okay. So yeah, these are the two reasons you failed, and these are the two takeaways. If you have any other takeaways, you can go ahead with those, or otherwise we can jump to the quick question quest. Shall we? Takeaways basically वही कि मतलब कुछ भी कर रहे हो, अपना पैशन फॉलो कर रहे हो लाइफ में. सो आई हैव बीन like this kind of person कि मतलब नहीं करना है. But I realize कि मतलब करो, लेकिन smartly करो. Smartly as you said कि calculative risk लो, तो वो चीज होनी चाहिए. ये नहीं मतलब ठीक है, कुछ टाइम आपको ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उसके लिए कि मे बी यू आर इन फुल टाइम जॉब, यू आर अनहैप्पी अबाउट दैट जॉब, लेकिन कुछ टाइम आपको उस अनहैप्पी जॉब में रहना पड़ेगा, बिकॉज आप सीधा जंप नहीं कर सकते हो अपने पैशन के लिए. you need stability, you need security. तो पहले आगे क्या कैलकुलेट करो कि क्या मेरे को मेरा पैशन फॉलो करके क्या मिल रहा है. क्या मैं खुशी के लिए कर रही हूँ, क्या मैं पैसों के लिए कर रही हूँ, किस चीज के लिए कर रही हूँ. So those are the things. Super. Those are pure experience. That's what people needed. Okay, so let's jump to the quick question quest, and here's the first question. Your story articles, means story of yourself, writing articles with your story, or knowledge sharing articles. Which one would you choose, first or second? So you have to first choose or second option. Yes, I will repeat. I will give you two options. You have to choose one of them. Okay. So first is your story article or knowledge sharing articles. Knowledge sharing articles. Okay, great that you were talking about that. Second question is B2B clients or B2C clients.
It's very difficult, but as I'm niching down B2B. Okay, super. Third one is few high budget clients or more less budget clients. Few high budget clients, definitely. Super. Okay, fourth one is late night work or early morning work. Oh, I don't fall in any of these, but I would say ki early morning. Those Okay. are very productive time. मैंने जिन भी लोगों को पूछा सब लोग अर्ली मॉर्निंग बोलते हैं बट आई एम द ओनली वन आई थिंक दैट लव लेट नाइट वर्क फिफ्थ Uh, वन इज ऑनलाइन रीडिंग और ऑफलाइन रीडिंग Offline. ऑफलाइन ओके sixth one is writing for brands or writing for person, which one do you prefer? Oh, confusing this is because I enjoy for both. But yeah, I would say even though I write for brands, but I would prefer for person. अब burden थोड़ा कम रहता है. What do you think? नहीं, burden कम वाली बात नहीं है. Okay. Like I feel so कि ना मतलब उनके साथ ना आपको एक अलग experience मिलता है. As in the form of conversation, communication, and learning from their experience. So Okay, I find that individuals के साथ वो ज़्यादा मिलता है because I have worked with coaches last year, like coaches and consultants. Coaches के साथ मैंने ज़्यादा काम करा है, तो मेरे को तो ऐसे लगता है कि life changing experience मिला है मेरे को. right, Not right, just right. in terms of working, कि मतलब I'm getting paid, not this, but you know self development part. I feel so कि मतलब मैंने उनके साथ जितना भी काम करा मेरे को बहुत सीखने को मिला है उनसे, उनकी स्किल्स, उनकी एक्सपर्टीज के बारे में. I'm So also a that. coach. That's why I can do that. हमें पढ़ाना, सबको एजुकेट करना, सबको मोटिवेट करना अच्छा लगता है. Okay. So last question is that write according to format. We are talking about LinkedIn writing. Okay. Write according to format or just write your heart out. What will you choose? I तो confusing है ये. दोनों नहीं चूज कर सकते क्या? एक चूज करना है. ओहो. So I would go for write your heart out. Super. Okay, so let's end this session with your favorite quote, and then I will give you I will give our audience a quote on failure. So yeah, just go ahead. Okay. So this is my favorite quote by Priyanka Chopra. Wow. So I follow her religiously because she is a feminist, and moreover I resonate with her with what she says, and she's such a bold personality. I am very attracted to her magnetic personality. So this is by her. Don't be afraid of solitary journeys. Being responsible for your success and failure makes you stronger. So this is something very powerful, she said. Super, super. मैंने देखा तुम्हारे LinkedIn पे I was checking which influencers you are following. So Gary Vaynerchuk, Ankur Warikoo, Priyanka Chopra. So there were many. Yeah. So let's end this failure stories session number 3 with a failure quote by Henry Ford, that failure is only the opportunity more intelligently to begin again. So understand करो, देखो कि why you failed, understand, analyze and just try. हम लोग भी बहुत बार failure हुए. नीति ने अपनी story बताई. She also failed so many times. She has very huge fear of maths. Still she struggled in her degrees, days of degrees, but still she's now 26 and she's stable today. So if you are also struggling, if you are into same phase, going through the same phase, just understand, stay कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. स्लोली कैलकुलेटेड रिस्क लो. फेल हो जाओ, फेल होने के बाद अंडरस्टैंड करो why we failed and then jump to the next step. So I also have very huge failure story, but I will record my own episode when we will hit 50 episodes of failure stories. मेरी failure story भी बहुत ज्यादा deep है, बहुत मतलब बहुत struggle था. So yeah, thank you for watching everybody and just take action. Good day.